what is pre-money valuation, what is post-money valuation, what are the gross margins, net margins, ROI, burn rate, cap table. There are so many important financial terms that every entrepreneur should know. And these financial terms not only make entrepreneur literate enough to maintain a good financial health of the company, but it even helps during external round of fundraising. So in this video, I'm going to cover the most important financial terms that every entrepreneur should know. And these are the most important financial terms in startup in business world. There are few more that are more technical and can be explained with the help of formulas, which I'm going to cover in the coming next 2 or 3 videos. So stay tuned. In today's video, I'm going to cover about 70 to 80% of the most important financial terms in simple language, and I hope you understand well. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। So hi guys, my name is Siddhant and I'm an entrepreneur consultant, and today we are going to discuss the most important financial terms that every entrepreneur should know. We all know that money matters is the most important thing in every business, because at the end of the day we all want to make profits, right? And it is also very important to make a business sustainable and have a good financial health. However, understanding financial terms makes it very easy for the entrepreneur to decide his pricing strategy, and also during raising external rounds of funding. So I'll explain each and every financial term in brief. So I hope you pay attention and you understand each and every financial term very well. So starting with the first one. So I'll start the first one with cash flow. What is cash flow? Cash flow is a very basic term that indicates the cash that flows in and out of the business. So it can be in the form of revenues and it can be in the form of expenditures. So it is the amount of cash that flows in and out of the business periodically, right? Now second term is assets. Asset is something that the company owns and it has a monetary value. Now they can be again classified into 4 types: fixed, current, tangible, intangible. Fixed is something that cannot be immediately converted into cash. So वो हो सकता है in the form of property which cannot be immediately converted into cash. Now current assets are something that can be converted into cash very easily. They can be in the form of stocks, inventory, bonds, or even cash, right? Now tangible assets are the ones that you can touch. They can be in the form of machines, hardware, anything tangible that you own. Intangible assets are the ones that hold a high monetary value but they are not tangible. So they can be in the form of patents, copyrights, trademarks, anything. Now along with assets comes liabilities. So liabilities are the debt that the company owns. So mostly वो होते हैं credit card के form में, या फिर debt from money lenders, or they can be even in the form of loans from banks or similar institutions. So again they are classified into current and fixed. Now current are the ones that you are gonna repay within a short period of year, maybe within a year, and वो होते mostly in the form of जो भी debt आप मनी लेंडर्स को ओ करते हो या सप्लायर्स को ओ करते हो. Now fixed liabilities are the ones that you are gonna repay over a period of few years, probably more than 1 year, and वो होता है in the form of debt जो आप बैंक से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो. अब इसके बाद में हम चलते हैं रेवेन्यू की तरफ. रेवेन्यू, टॉप लाइन, टर्नओवर, कुछ भी कह लीजिए. सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स इनसाइड द कंपनी ड्यू टू सेल्स. सो इट इज टोटली द अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम सेल्स, एंड बॉटम line is the money that remains after you pay off all the expenditures, expenses in the form of overheads, rents, salaries, everything. Run rate, annual revenue run rate. So what is annual revenue run rate? It is the amount of money that you are on the way of making during that financial year. तो suppose मैं investor के पास जाता हूँ और मेरे पास 12 months के sales नहीं है, because I've started doing business just 3 months ago, right? I've just completed my first quarter और मैंने उन 3 months में 10 lakh rupees के sales किए हैं. Now what the investor will look at, that he doesn't have the data for the whole 12 months, but he has the data for the first quarter. So he will multiply the first quarter by 4, that is 10 into 4, 40 lakhs. So I am on the way of doing 40 lakh rupees revenue for that financial year. So 40 lakhs is the annual revenue run rate of that company for that year. Now burn rate. Burn rate is similar to the revenue run rate. Now revenue is something that you make periodically and then you calculate the annual amount of money that you make. Burn rate is something that you lose periodically, maybe every month, and it is the total amount of money that you lose during that year. So suppose
मैं 40,000 रुपीज़ अ मंथ बर्न कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई बर्न अबाउट 4,80,000 रुपीज़ एवरी ईयर, सो दैट बिकम्स माई एनुअल बर्न रेट. Return on investment, ROI, it is the most important term that investors take into consideration, because at the end of the day, what they want on their investment is the return. Now this return is in the form of two things: time and money. So they are bothered about how much time you will take to return that money, and they also care about the amount of money that you will repay them as the interest during that amount of time. Cap table, what is cap table? तो cap table एक simple spreadsheet है, एक data sheet है, एक excel sheet है, which indicates the amount of equity that the founder, investors and other stakeholders own. तो काफ़ी simple होता है, excel sheet में भी बन जाता है. Term sheet, so once you have agreed on all the terms with the investor and you're on the verge of getting an investment, सो वो टाइम पे एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम होता है टर्म शीट. सो टर्म शीट के ऊपर सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है. तो गेटिंग अ टर्म शीट इज़ द फाइनल स्टेज before getting an investment, but having a term sheet doesn't mean that you will guaranteedly get an investment. अगर आपने टर्म शीट और इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले बीच के पीरियड में अगर आपने कुछ गलतियाँ की या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस में, तो फिर आपकी फंडिंग कैंसिल भी हो सकती है. सो टर्म शीट is basically the last step of fundraising, but it doesn't guarantee you the funding, right? Now, sweat equity. Sweat equity हम सब ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन वो co-founders के बीच exist करता है. It is not something that you give to the investors. Suppose मैंने सारे पैसे लगाए, idea is mine and I've started the business. So I own the 100% of the business. But now I want to bring a person in as a co-founder and he is not investing any money, but I still give him the 5%. Why? So I'm giving him the 5% for his work, his contribution, his skill, his knowledge, his time and everything that he invests in the company. तो अभी के लिए तो उस 5% की कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, बट व्हेन वी गो फॉर फंड रेजिंग, दैट टाइम एक कंपनी की वैल्यूएशन बन जाती है, तो उस समय उस 5% को एक मॉनेटरी वैल्यू मिल जाएगी. ग्रॉस मार्जिन्स, व्हाट आर ग्रॉस मार्जिन्स? सो ग्रॉस मार्जिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द मार्जिन दैट आई मेक ऑन द सेल ऑफ एवरी प्रोडक्ट. सपोज मैंने 80 रुपीज़ में प्रोडक्ट खरीदा और मैंने 120 में बेचा, तो 40 रुपीज़ इज द ग्रॉस मार्जिन. Net margin is the one that remains with us. It is the one that goes in our pockets, because net margin is gross margin minus all the expenditures, expenses, rents, overhead, salaries, right? तो suppose मैंने 40 रुपीज़ ग्रॉस मार्जिन कमाई, पर मैंने रेंट, ओवरहेड, सैलरीज से 15 रुपीज़ और डिडक्ट कर दिए. सो 25 रुपीज़ इज द फाइनल अमाउंट दैट गोज इन टू माई पॉकेट, right? So 120 के प्रोडक्ट पे I made 25 rupees. Equity. Now equity is something that a founder or an owner owns, right? And it is something that you give to the investors or stakeholders in exchange of money. But equity का एक formula, equity is assets minus liabilities, because definitely you cannot give a share of your liabilities, right? So आप equity कितनी own करते हो, it depends upon your assets deducted by your liabilities. As we discussed that revenue, top line and turnover are the total amount of sales that I make, but उससे कंपनी की हेल्थ जज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और एक्चुअली वो राइट मेट्रिक भी नहीं है. लेकिन कंपनी की अगर हेल्थ हमें जज करनी है तो वो दो चीज़ों से हो सकती है. फर्स्ट, इट इज़ द इनकम, the bottom line, and the second is the working capital. Now the working capital is the money that the company has currently to support itself. Now working capital is nothing but current assets माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो जो भी पैसा मेरे पास वर्किंग कैपिटल के लिए है, इट सपोर्ट्स द डेली फंक्शनिंग ऑफ माई कंपनी. नाउ व्हाट इज प्री मनी वैल्यूएशन, व्हाट इज पोस्ट मनी वैल्यूएशन? सो प्री मनी वैल्यूएशन इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बिफोर रेजिंग एनी फंड्स, and post money valuation is the valuation of the company after I raise the funds at a particular percentage and after raising a particular amount of money. Now पोस्ट मनी वैल्यूएशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है प्री मनी वैल्यूएशन से, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पैसे ले रहे हो और कितनी इक्विटी दे रहे हो, right? Now next, angel investors. Now angel investors are the ones who invest their own money. वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल हु नो यू हो सकते हैं, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या एक्सपर्ट्स हो सकते हैं उस फील्ड में, जो अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. और एंजल इन्वेस्टर्स काफ़ी अर्ली स्टेज आते हैं जब आपके पास सिर्फ एक हाई पोटेंशियल आइडिया होता है. वेंचर कैपिटलिस्ट्स काफ़ी डिफरेंट होता है. सो वेंचर कैपिटलिस्ट्स आर द पीपल who do investing as their daily job, right? लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट अपने खुद के पैसे नहीं लगाते. वेंचर कैपिटलिस्ट्स इन्वेस्ट
इन्वेस्ट द मनी फ्रॉम द पूल ऑफ फंड दैट दे हैव जनरेटेड बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, राइट? एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स एक्चुअली कम इन एट अ मच लेटर स्टेज, जब आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी भी रेज कर रहे हो, जब आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो. Seed funding is again a very initial stage of fundraising, like angel investors. It can be before angel investment and it can be after angel investment. It usually depends, लेकिन mostly seed fund comes after the angel round, लेकिन it totally depends upon how you go about fundraising. And seed fund के time पे you probably have an idea and you also have a bit of consumer traction जो आपने prototype या minimum viable products find out किया होगा. Now series A, series B, series C, it goes on till the exit IPO, right? So series A में you need a product and आपके पास revenue होना चाहिए. Series B में you again need a considerable amount of revenue. Series C is done at much later stage जब आपको pan country या pan India suppose scale करना है, वो टाइम पे series C आता है. And then it goes on to D, E, F and finally IPO. Now IPO is initial public offering जहाँ पे आप कंपनी को stock exchange में list करते हो and वहाँ पे आप फिर पब्लिक से पैसे उठाते हो एंड देन द पब्लिक बिकम्स योर शेयर होल्डर. तो आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझने के लिए आपको ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन और बर्न रेट, रन रेट सब समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियली हेल्दी बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए, एक हेल्दी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा. तो उसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज, मेथड्स, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स जो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके कर सकता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बेल आइकन हिट करना भूलना मत, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पर लेके आता हूँ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड. और आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी अपलोड करूँगा सक्सेसफुल कंपनीज़ के बारे में, फेल्ड कंपनीज़ के बारे में, काफ़ी सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में. तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.